जय भीम, नमो बुद्धाय। सोनू भैया, मेरे भी पता नहीं क्यों आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा है। आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा भैया। ऐसा क्यों? पहले तो तुरंत आता था। जय भीम, नमो बुद्धाय। सुभाष भैया, थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है बहन जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताइए आप कैसे हो? सुभाष भैया, आप बताइए आप कैसे हैं? खाना पीना हुआ आपका? जय भीम भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू। कैसे हो भैया? हम ठीक हैं। अच्छा भैया, ठीक ही रहना चाहिए। खाना पीना हो गया आपका? सब बढ़िया है भैया, ठीक है सब। हमारा भी खाना पीना हो गया, बच्चे भी जग रहे हैं। कहाँ चली गई थी? कहीं गई नहीं थी भैया। नहीं सोनू भैया, यहाँ से चालू है नोटिफिकेशन आपका। सच्ची पता नहीं क्यों ऐसा मेरे पे नहीं आ रहा, आप ही का नहीं किसी का नहीं आ रहा।
किसी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा भैया, इसलिए मुझे पता नहीं क्या हुआ है फोन में। नोटिफिकेशन चालू है आपका। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम तो परेशान तो हो रहे थे कि हमारी छुटकी बहन कहाँ चल गई। नहीं भैया, हम कहीं गए नहीं थे। जब गए थे तो आप देखे भी थे। पंजाब, पंजाब से फिर दिल्ली आ गई। घर में शादी थी ना सुभाष भैया, इसलिए थोड़ी सी बिजी थी। क्या क्या बना है? क्या क्या बना है मेरे घर में इतने टाइम? पनीर बनी है और और क्या, मिक्स सब्जी, आलू मटर गोभी की सब्जी, क्योंकि मैं पनीर नहीं खाती हूँ। तो मैं मिक्स सब्जी बनाई थी और बाकी सब लोग अपने लिए चिकन बनाए थे, जो खाने वाले हैं। थैंक यू सुभाष भैया, थैंक यू सो मच। हमसे जो वादा किया है आपने बहन, वादा है ना? क्या भैया बताना, सुभाष भैया प्लीज बताना एक बार। सुभाष भैया बताना क्या चीज। थैंक यू सो मच। बताना भैया क्या वादा। अरे अरे, पीछे होके सो बेटा। जुराब निकाल दिया ना? पैर कितना ठंडा हो गया देखो। क्यों निकाल दिया? जुराब पहनो। कहाँ गरम है? श्रेया का पैर बहुत ठंडा है। मैंने जुराब नहीं निकाला, अभी वो निकाला। अच्छा, तुम अभी भी निकाली हो? हाँ। मैंने तो देखा तुम पहन ही नहीं थे। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। आप कैसी हो दीदी? जय भीम, नमो बुद्धाय। भारती भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? भुला गई हमार बहन? नहीं भैया प्लीज एक बार बता दीजिए, हो सकता है कभी कभी माइंड से कोई चीज उतर जाती है। आप दवा खाई थी? हाँ भैया मैं दवा खा ली, खाना भी खा ली, दवाई भी खा ली। आप बताइए आपका स्वास्थ्य कैसे है? भुला गई लू भाई। नहीं भाई भुलाई नहीं हूँ। बता दीजिए एक बार क्या चीज, वही सोच रही हूँ माइंड में। कोई किसी को नहीं भूलता है, ये जान लीजिए। कभी भी आपके आंसू नहीं आने चाहिए, वादा करो। तो कहाँ रोती हूँ भैया? जब से वादा किया कहाँ रोती हूँ बताओ।
हंसती तो रहती हूँ अब अपने भाई से। बिल्कुल भैया बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि दीदी को ज़्यादा इमोशनल नहीं कीजिए। जय भीम भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच सभी भाइयों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। सुभाष भैया थैंक यू सो मच। बताइए आपके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया? भोजपुरी आती है आपको? हाँ भैया मुझे बिल्कुल भोजपुरी आती है। मैं देहात से बिलोंग करती हूँ, यूपी से। भोजपुरी आती है। मेरे हिसाब से बिहार और यूपी में थोड़ा हल्का फुल्का डिफरेंट है, बाकी भाषाएं तो ऐसे ही हैं। और सब बोलिए दीदी, सब बढ़िया? भैया भारती भाई सब बढ़िया? आप बताओ अपना, आप ठीक हो? मेरी बहन तो सब ठीक है। ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। सुभाष भैया बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच भारती भाई, थैंक यू भैया। थैंक यू भारती भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुभाष भैया, थैंक यू। आज दिन बहुत खास है बहन के लिए मेरे पास है, उसके सुकून के खातिर। ओ बहन, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। थैंक यू भैया सभी सम्मानित साथियों को। हमारे दादा परदादा की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। थैंक यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई तो हमनी के ओकर हल निकाले जाई। हमनी के लिए सब भाई बहन। बिल्कुल भैया बिल्कुल, एकता होनी चाहिए, एक दूसरे को फीलिंग को समझना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भैया जी, थैंक यू भैया। थैंक यू। सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है लेकिन बहन का आंसू बर्दाश्त नहीं होता हमसे। थैंक यू भैया, थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। दीदी आप लाइव कब चालू किया था? मुझे लाइव चालू किए 22 मिनट हो गए भाई। भारती भाई 22 मिनट हुए हैं अभी। अभी मेरे घर में सब लोग जग ही रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा चलो चालू कर लेती हूँ। सच्चे लोग को इस दुनिया में सच साथ देने वाले बहुत कम लोग हैं मेरी बहन जी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट, आप राइट बोल रहे हैं। आज के टाइम में लोगों को ना गंदगी ज्यादा पसंद है। तो आप इतनी देर से क्यों लाइव चालू किया था दीदी? क्या क्या करूं भैया, मैंने बस ऐसे चालू कर ली कि चलो अभी लोग जग रहे हैं, हम भी जग रहे हैं। काम करके, अभी तो मैं काम करके किचन में से आई हूँ। अब पूरी फैमिली जब इकट्ठा हो जाती है ना तो सब कुछ संभालना पड़ता है भैया। भारती भाई, कच्चे धागे की डोर का एक ऐसा नाता है, वक्त आने पर बहन के लिए भाई पिता और भाई के लिए बहन माता। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। 100% सच्चाई है ये, बिल्कुल सही आपने कहा। आप कुछ देर के बाद लाइव को बंद कर दीजिएगा दीदी। हाँ भैया, मैं ऐसे ना म्यूट करके बेशक ऐसे लाइव चलती है, मैं फिर ज्यादा देर तक जगती नहीं हूँ, सो जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ ना, मेरा साल कंप्लीट हो गया, मेरा वॉच टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा चैनल कैसे मोनेटाइज होगा, इसलिए लाइव चलाना पड़ता, नहीं तो मैं सिरदर्दी नहीं लेती। और जल्दी से सो जाओ। सो जाएंगे भैया, अभी तो बच्चे भी जग रहे हैं। मेरी ननद आई है ना, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हीं के साथ अभी खेल रहे हैं सब। आप सच्चे और अच्छे हो इसलिए मदद करने वाले कतरा कर निकल लेते हैं। कोई बात नहीं भैया, मुझे इसका फिक्र नहीं होता है। कम ही लोग रहे पर अच्छे रहे, सच्चे रहे।
वो भीड़ किस काम की जब कोई किसी अर्थ लायक का ना हो। ये दुनिया बहुत शेरहम है मेरी बहन। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुभाष भैया। मैं देखता हूँ कि हमेशा आप काम ही करती रहती हो दीदी। भैया क्या करे, जब फैमिली है ना तो करना पड़ता। ससुराल है ना, मायका तो नहीं है ना भैया। जब अकेली रहती हूँ तो 3 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेवारी। जब पूरी फैमिली रहती है तो सबको देखना पड़ता है। कितने अभी बाकी हैं दीदी? अभी तो मेरे 1500 कंप्लीट हुए हुए भैया। मैं कहाँ बराबर चलाती थी। मेरा तो चैनल नवंबर में बन गया था, 6 नवंबर को। उसके बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई 14 नंबर के। उससे पहले मैंने सब छोड़ दिया। मैं मार्च अप्रैल से मेरा वीडियो कंटिन्यू जा रहा है। वो भी बीच बीच में कभी कभी नहीं जाता जब तबीयत खराब रहती है, नहीं तो मैं पहले नहीं डालती थी वीडियो। ये दुनिया कुछ नहीं देने वाली है। सच में भैया, दे या ना दे पर व्यवहार जो अच्छा होना चाहिए। किसी के देने लेने से कुछ नहीं होता, स्वभाव अच्छा होता है भैया, जो हमेशा जिंदगी के लिए यादगार होता है। नहीं, हाँ कोई था अच्छा, किसी का व्यवहार अच्छा था। मुझे जरा बताना दीदी, मैं क्या कर सकता हूँ दीदी आपके लिए? कुछ नहीं भाई, भारती भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बता नहीं दीदी, सब बदलेगा दीदी। मैं आपके साथ दूंगा दीदी। मैं ये वादा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू भाई, थैंक यू भारती भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बस कुछ नहीं चाहिए। मैं ये सोचती हूँ ना, एक दूसरे के प्रति जो ये चीज होती है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। बस एक जो भाई बहन का रिश्ता बरकरार होना चाहिए। ऐसी कभी दरार ना आए जिंदगी में। इंसान के स्वभाव से और लगाव से, अच्छे व्यवहार से ज्यादा कुछ नहीं है। कोई चीज मायने नहीं रखती है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को दर्द को समझना, ये चीज होता है और क्या होता है। आपको क्या लगता है दीदी मेरे प्रति? अच्छा लगता है भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग को हमने देखा है, दुनिया सच में गोल नहीं है। दुनिया तो हम जहाँ जन्म लेते हैं वह शुरू होती है और अपना अंतिम दिन है ये दुनिया की गोलाई खत्म हो जाती है मेरी बहन। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सुभाष भैया।
दीदी आप मेरे बातों को मजाक में लेती हो ना? नहीं भाई, मैं किसी की बात को मजाक कभी नहीं लेती, सच्ची। इसीलिए शायद मैं किसी को अच्छी नहीं लगती हूँ। हमारी भी 4 सगी बहन हैं और 5वें मैं आपको हमारी 5वीं बहन हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भैया, थैंक यू, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भैया समझने के लिए। सभी बहनें हैं, सबको समझना चाहिए। अगर बहनें सभी अगर भाई की दर्जा देती हैं तो सबको समझना चाहिए। मैं यही सोचती हूँ, चाहे कोई बहनें हों। भाई बहन के रिश्ते जैसे कोई रिश्ता होता ही नहीं है भैया सुभाष भैया, ये भी समझ लीजिए। उन बहनों में और आप में कोई फर्क नहीं, हमने समझा है। थैंक यू सो मच भैया सुभाष भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको हमेशा ख्याल रखता हूँ दीदी, ताकि आप हमेशा खुश रहो। बिल्कुल भारती भाई, मैं भी देखती हूँ आप मेरी बहुत केयर करते हो, मुझे भी एहसास होता है। ऐसी बात नहीं है भैया, आप लोग हमको खुश देखने के लिए पूरी कोशिश करते हो। आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग समझते हो। यदि विश्वास ना हो तो आप सोनू भैया से और फूल कुमारी दीदी से पूछ सकती हो दीदी। मुझे पता है भैया, आप फूल कुमारी सिस्टर के लाइव में मुझे पूछ रहे थे, सोनू भैया के लाइव में पूछ रहे थे। मैं प्राकृतिक से हमेशा आपके लिए कामना करता हूँ कि मेरी दीदी को हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रखे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई भारती भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ही आईडी चल रही है क्या? एक भारती सोनू भैया के लाइव में। ना बेटा लाइव चल रही है। आप नियमित समय पर दवा खा रही हैं दीदी? हाँ भैया, मैं दवा बराबर खा रही हूँ। दवा छोड़ दूंगी तो मुझे दिक्कत होगी ना, फिर फायदा क्या है।
या फिर आप दवा खाने में लापरवाही कर रही हो दीदी? नहीं भैया, 2-3 दिन बीच में हुई थी, टाइम का इधर उधर हो गया था, लेकिन अब नहीं। मुझे पता है आप अपने आप को कितनी केयर करती हो। नहीं भारती भाई, करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी आपके लाइव में ही सिर्फ दीदी मैं हूँ, सिर्फ दीदी। अच्छा भैया, नहीं सोनू भैया के लाइव में ना मैं दूसरे फोन से सपोर्ट कर रही थी ना, तो मैंने देखा AK भारती लिखा, AK भारती 99 AK। हमेशा झूठ बोलने का काम करती हो मुझे खुश करने के लिए। नहीं भारती भाई, झूठ नहीं बोलती मैं, सच्ची। मैं झूठ नहीं किसी से बोलती भाई, ना दिखावा करती हूँ, ना किसी को गुमराह करती हूँ। जो बात होती है वो सही बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ। झूठ इंसान 1 दिन 2 दिन बोलेगा, तीसरे दिन उसका सामने आ जाएगा। झूठ ज्यादा नहीं बोलती भैया मैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर आपको मालूम नहीं है कि मेरा भाई एक मनोवैज्ञानिक है, वो हर झूठ को पहचानने का काम करता है। बिल्कुल भारती भैया, बिल्कुल मुझे पता है, मुझे पता है, पर झूठ नहीं बोलती भैया। दीदी आप से मेरा मुलाकात कब होगी, मैं ये सोचते रहता हूँ। जिस दिन आपकी शादी होगी, आपकी शादी में आएंगे भारती भाई। मुझे भी पता है दीदी आपका पूरा विचारों के बारे में। चले सो जा, सो जाओ बेटा। नहीं ये गलत बात है दीदी। क्यों भारती भाई, क्यों गलत है?
मेरी शादी अभी से कम 6 से 8 साल लगेगा। कोई बात नहीं है भैया, जब भी आपकी शादी होगी तब भी आएंगे आपके घर। तब तक मैं कैसे ऐसी बात नहीं है भारती भाई। अच्छी बात है भारती भाई, बहुत अच्छी सोच है। बस इस सोच को कायम रखना। ऐसे विचार होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट कह रहे हो भारती भाई, बिल्कुल। भाई बहन जैसा रिश्ता आज तक कहीं नहीं हुआ। कोई रिश्ते नहीं है। ओके भैया, थैंक यू। करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए। माँ बाप के पूरे यही उम्मीद होते हैं कि हमारे बच्चे सबसे आगे जाएं। और जब बच्चे सक्षम हो जाते हैं ना, माँ बाप को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। उसी दिन वो सोचते हैं ना कि हमारा जो भी था परिश्रम सफल हो गया है। जीवन में बहुत ज्यादा वो उनको खुशियां मिलती है जिस दिन बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। माँ बाप की बस एक यही उम्मीद होती है कि नहीं, हमारे बच्चे कहीं हों हमारे सामने। इससे ज्यादा खुशी उनको कोई चीज, किसी चीज की खुशी नहीं हो सकती है। तो बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि नहीं। आपकी बहुत अच्छी सोच है भारती भाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दीदी कि जो भी गलत कर्मों को श्रेणी में आता है, मैं उन सभी कर्मों से दूर रहने का काम करता हूँ दीदी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। बिल्कुल काम ही ऐसा करना चाहिए भाई कि देखने वाला भी कोई कुछ सीख सके उससे। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं।
ऐसा बात नहीं है दीदी, आप लोग मुझे हौसला बढ़ाने का काम करती हो दीदी, इसके लिए मैं आप सभी लोग को हमेशा आभारी रहूंगा। नहीं भाई, आप खुद बहुत समझदार हो हम लोगों से ज्यादा, क्योंकि हम लोग इतना समझदार नहीं है। सच्ची बता रहे हैं, आप जितना हम लोगों का ये मौका ही नहीं मिला, मतलब पढ़ने लिखने का या कुछ ऐसी। जब शिक्षा नहीं होती है तो ज्ञान का भी अभाव होता है, आपको पता है। आप तो बहुत ही समझदार हैं। मैं एक हाथ से कमेंट कर रहा हूँ दीदी, इसलिए लेट से कमेंट पहुंच रहा होगा। क्यों भैया, क्या हुआ भारती भाई, हाथ से कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी मैं सोया हूँ दीदी। अच्छा भैया सो जाइए, क्योंकि आपको सुबह जाना होगा ना कॉलेज। सच्ची भाई, मैं हम लोगों का बस यही सपना होता है, नहीं जितने भी हमारे भाई बहन है ना, अच्छी जगह जाएं, बहुत आगे जाएं। मुझे आप लोग के रहते कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दीदी। हो भी ना भाई, कभी ना हो। कल तो संडे है दीदी। हाँ भैया, कल संडे है। फिर भी तो भैया काम तो होता है ना पढ़ाई का, संडे को तो और होता है। आपकी बात तो सही है भारती भाई, पर मैं आपसे इतनी काफी बड़ी नहीं हूँ भैया। भांजा और भांजे सो गए हैं दीदी। अभी कोई नहीं सोया भैया, अभी जग रहे हैं, सब जग रहे हैं। हस्बैंड का भी आज घर पे है, वो 4 दिन से छुट्टी ली है शादी की वजह से। वो भी जग रहे हैं, बच्चे भी जग रहे हैं। जब वो घर पे होते हैं तो बच्चे उनके साथ जब तक जगते हैं तब तक जगते हैं वो। दीदी आप हमसे बहुत बड़ी हो। नहीं भारती भाई, इतना ज्यादा बड़ी नहीं हूँ आपसे। इतना ज्यादा बड़ी नहीं हूँ भारती भाई आपसे। कहाँ ज्यादा बड़ी हूँ भारती भाई, बताओ। ये कैसे सोई बेटा, एक साथ सो चलो। नहीं बेटा, पैर फैलाओगे चोट लग जाएगी, आ जाओ जाओ। नहीं चोट लग जाएगी, सीधे सो जाओ। गर्मी लग रही है? अच्छा, गर्मी लग रही, नहला दो ठंडे पानी से बाबू। ठंडे पानी से नहला दो। अच्छा, पापा के पास जाओ। मेरा तो उम्र ही अभी 20 वर्ष हुआ है, इसलिए मुझे इस साल बहुत सीख
अच्छा भारती भाई, तो आपसे कितनी बड़ी हूँ? 20 साल हुआ आपसे, ज्यादा बड़ी मैं भी नहीं हूँ। रोने वाली लड़की सो गई है भाई, छोटी वाली है जो कॉमेडी करती है। रोने वाली लड़की सो गई है जो आपको बोल रही थी बैड बॉय हो। सीख यानी गुस्सा दीदी। अच्छा, किस बात का गुस्सा भैया? जरा मुझे कॉमेडी करके दिखाओ भांजी। कब तक सो जाएगी दीदी? पता नहीं भाई, अभी कब तक सोएगी, अभी तो जग रही है ये। दिन में सो ली थी आज, दिन में सो लिए थे ना कल हम लोग, तो वहां से रिसेप्शन पार्टी में से ही आए थे तो काफी लेट हो गया था, तो ये इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, सुबह उठ भी गई थी, इसलिए आज दिन में सो ली है, तब रात में नींद नहीं आ रही इसको। क्यों बैठी हो? इधर आओ, इधर आओ कॉमेडी वाली बाबू, सीधे जाओ। सो जाओ, सो जाओ। मामा क्या कह रहे हैं? कॉमेडी करके दिखाओ हमें, कॉमेडी करके बोलो, कैसे दिखाएं? कॉमेडी कैसे करते हैं? ऐसी कोई कॉमेडी होती है? हम्म। मैं तबला नहीं। तब का शर्मी। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात का होता है कि दीदी की सोशल मीडिया पर रिश्ते बनाने का दौर जोरों से चल रही है दीदी, और उस रास्ते को बहुत कम लोग निभाने का काम कर रहे हैं दीदी। सबकी अपनी अपनी सोच होती है भारती भाई, इस दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते हैं। आप किसके ऊपरी मन से क्या है, अंदर से क्या है, उस चीज को तो नहीं कोई समझ पाता ना। आपकी बात तो सही है, पर हमेशा इंसान को रिश्ते जो होना अच्छे मन से होना चाहिए, कभी भी दिखावापन नहीं। ये तो आप बिल्कुल सही बोल रही हैं दीदी, सच्ची भारती भाई मैं बोल रही हूँ कि सही बात है।
पर जिसका जैसा सोच, वही तो मैं भी कह रही हूँ, सबकी सोच एक जैसी नहीं हमेशा होती है। इंसान कोई भी रिश्ते अगर दिल से निभाता है ना, नहीं अपनों की तरह, अपनी फैमिली की तरह, तो वो रिश्ते चलते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया को चाहे अपना हो। और जो लोग ना सिर्फ दिखावा करते हैं, फिर दिखावा आपको पता है ज्यादा दिन नहीं टिकता, इसलिए रिश्तों में दरार आती है। मैं जितना कर सकता हूँ उससे बहुत कम किसी से वादा करता हूँ दीदी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल करना ही चाहिए ऐसे ही। नहीं, कभी भी किसी को ये नहीं होना चाहिए नहीं हम उसको बता के चीज कर रहे हैं। आदमी का अगर इंसानियत का नाते अगर उसके अच्छे व्यवहार हैं, अच्छी सोच है, तो खुद ही दर्शाता है कि नहीं सामने वाला इंसान कैसा है। किसी से बताने से थोड़ी होता है, इंसान खुद ही समझ जाता है उसके बातों व्यवहारों से। क्योंकि वादा अक्सर वही किया करते हैं जिसको निभाना नहीं होता है। हाँ भैया, सही कह रहे हो आप, वही तो मैं कह रही हूँ ना। कभी हम सामने वालों को बता के करे वो नहीं अच्छा होता है, बिन बताए उसको एहसास दिलाए वही होता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल दीदी, थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। सो जाओ, आँख बंद करो, बंद करो आँख, सो जाओ जल्दी। गर्मी लग रही है, कितनी गर्मी लग रही है। पंखा चालू कर दो। ना ना भैया, मुझे ठंडा लग रहा है और मेरे पंखा। को गर्मी लग रही है। तभी तो कह रहे ना, हेलो। ठीक है, नहा दो। मैं कभी किसी से वादा ही नहीं करता हूँ दीदी। वही तो मैं कह रही हूँ भैया, करना भी नहीं चाहिए किसी से। श्रेया सो गई ना बाबा, तुम भी सो जाओ। नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही तो क्या करो बताओ, पट्टी बांध दो आँख पे। मैं 4 बजे सोऊंगा। 4 बजे सोऊंगा तो मैं 4 बजे थोड़ी जगूंगी। तो मैं 4 बजे सोऊंगा। ठीक है, चुप हो जाओ, आँख बंद कर लो बस। कल और आराम कर लो, फिर मंडे से स्कूल। काम भी तो करना है, आराम क्यों करूँ मैं? काम करूंगा। काम करोगे? काम में पूरा बचा है। काम फिनिश कर लेना। मैथ 1 वर्ड लिखा है सारे सब्जेक्ट। अच्छा, मैं अपना पूरा जीवन स्वस्थ रूप से जीऊंगा तो एक अलग तरीका से सभी के दिलों पर राज करूंगा दीदी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। पहचान इंसान की यही से होती है, जिंदगी जो थोड़ा किसी से हट कर, और जब कोई हट कर जीता है ना, उसके रास्तों में कांटे बहुत सारे आते हैं। मेरा यही मकसद है और कुछ नहीं। आज क्या क्या खाई थी भांजी? मामा पूछ रहे थे क्या क्या खाई थी। शाही पनीर। थोड़ा तेज बोलो। शाही पनीर, मिक्स वेज पनीर और रोटी सब्जी। शाही पनीर खाई थी, मिक्स सब्जी खाई थी और मिक्स रोटी। वेज सब पनीर। अच्छा, और रोटी। हाँ, आलू की सब्जी खाई थी। और आलू की सब्जी। हाँ। तो आलू की सब्जी तो मिक्स सब्जी में थी ना। हाँ। तो फिर शाही पनीर नहीं खाए? खाया। खाया ना। हाँ। तो फिर मात्र एक पनीर खाई। मात्र एक पनीर खाई? काहे, तुमको मिला नहीं कि खाई नहीं? मिला नहीं।
झूठ बोल रही झूठ बोल रही हो फिर। नहीं सच में बोलता। मुझे रोज धमकी मिल रहा है दीदी, कॉलेज के लड़के लोग दे रहा है कि तुम अम्बेडकरवादी हो। अच्छा भैया, धमकी से कभी नहीं डरना चाहिए मेरे भाई। तुझे छोड़ूंगा नहीं, और मैं अकेला अम्बेडकरवादी हूँ इतने बड़े कॉलेज में। कोई बात नहीं है भाई, मैं तो यही कहूंगी आपसे कभी अकड़ के नहीं रहना है उन लोगों के बीच में, क्योंकि हमारे लिए ना, हमारे समाज के लोगों के लिए इतनी ज्यादा चुनौतियां आ गई है ना, कि लोगों को ये लग रहा है ना कि हम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं इनको शिक्षा अच्छे से प्राप्त ना हो सके। हमारे लिए इसलिए इतनी बाधाएं आ रही हैं, हमें शिक्षा से वंचित करने के लिए। कोई बात नहीं है, हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा भारती भाई। आपको पता है ना, थोड़ा झुककर ही हमें जीना है। जब हम अपने सक्षम हो जाएंगे ना, तब उनको दिखाना है कि नहीं, कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अभी आपका काम अपना है, आपको पता है कि इतने लोगों के बीच में हमको कैसे आगे बढ़ना है। अकड़ से रहेंगे ना तो हम फिर वो चीज हमें हासिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी सोच में, वो अपने सोच में मकसद हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने काम को पूरा करने के लिए ना थोड़ा झुकना ही चाहिए, जब तक हम अपनी बुलंदियों तक नहीं पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो कह रही हूँ भारती भाई, इसीलिए कह रही हूँ। हमेशा एक चीज और होना चाहिए, मेरी तो सोच है, मेरा एक बेटा, मैं उसको जिस दिन पढ़ा लिखा के कुछ बनाऊंगी ना, तो मैं बोलूंगी बेटा कुछ नहीं, अपने समाज के लिए जरूर कुछ करना। अपने समाज के जितने बच्चे हैं गरीब, उनके लिए जरूर कुछ करना। हाँ, मैं आप पर यकीन करके ये बात आपको जानने का काम किया हूँ दीदी। कोई बात नहीं भैया, एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। कोई किसी के साथ मुसीबत में दूर से कोई तो साथ नहीं दे पाता है, पर हाँ इतना है कि साहस जरूर मिलता है कि नहीं। हम्म, हम्म। अब मैं सुन रहा हूँ 5 मिनट तक दीदी, आप इस पर अपना विचार रखने का काम कीजिए दीदी।